हेलो दोस्तों, यू शेयर ऑन द व्हाट्सएप रिपोर्ट इन कमेंट बॉक्स शेयर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लैवोजियर को। फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री इज लैवोजियर। ओके, लैवोजियर, लैवोइजियर। ओके, लैवोइजियर। A pure substance can only be an element and a compound. Okay, और a compound is known as the pure substance. आपको बता चुके pure substance का मतलब एक एलिमेंट होगा या एक compound होगा। Compound why? Because there is a fixed quantity, the fixed. Okay, that is the reason of the pure substances. Which on the among the following compound has the same equivalent weight and molecular weight? NaCl का same equivalent weight and molecular weight होगा। Most abundant metal in the earth crust, aluminium. Most abundant metal in the earth crust, aluminium. Which one of the following is not an element? Silica. Silica is not an element. Silica is not an element. Diamond, ocean and graphite. Diamond, ocean and graphite is these are the element. Okay. An alloy is the mixture. An alloy is a mixture. An alloy is a mixture. An alloy is a mixture. Name of the scientist who stated that matter can be converted into energy. So what? And a scientist who stated that matter can be converted into energy. Who is the given answer? Einstein. Given answer. Einstein. Who name of the scientist stated that matter can be converted into energy. Matter can be converted into energy is called the Einstein. Sodium carbonate crystal losses. Okay, sodium carbonate crystal losses molecule. This property is de-liquescence और नहीं बल्कि एफ्लोरेसेंस कहलाता है। एफ्लोरेसेंस कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल loses water molecule. This property is called the एफ्लोरेंस कहलाता है। लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज द enunciated Proust. Law of the constant proportion was initiated. ओके, किसने विचार किया था? इनिशिएटेड, ENUCIATED, इनिशिएटेड, नॉट इनिशियल, इनिशिएटेड, विचार किया प्रॉस्ट ने। द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मासेस कार्बन 14. ओके, कार्बन 14, बट देयर इज द गिवन ऑफ द कार्बन 12. atomic mass unit is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27. Atomic mass unit 1 atomic mass unit is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27. 1.67 into 10 to the power minus 27 atomic mass unit equal to 1 carbon is equivalent to 1000 kilogram of carbon dioxide. 1 carbon is equivalent to 1000 kilogram of carbon dioxide. 1000 kilogram of carbon dioxide. 1 carbon is equivalent to produce of the product of equivalent weight and valency. Product of equivalent weight and valency. Equivalent weight and valency product is known as the molecular weight. Okay, what is known as the atomic weight or molecular weight? Atomic weight. Equivalent weight and valency is known as the atomic weight. Product of the equivalent weight and valency is known as the atomic weight. Which one is the not metals? Who is the not metals? So all. Okay, milk is the mixture. Air is the mixture. Which one is the pure element? Which of the pure element? Sodium is the pure element. Which one of the compound is in the following? Which one is the compound is following? Which one is the compound in the following?
compound ammonia. Okay, compound in falling ammonia, not air. Air is the mixture, oxygen is the element. Okay, diamond is an element. If there is 1 million of magnesium 2 plus ion in MgCl2, how many chlorine ions are there? How many chlorine ions are there? 2 millions. Which of the following compound is not characteristics of compound? Which of the following is not a characteristics of compound? So its constitution cannot be the separate physical method. Composition is variable. Composition is a variable. That is not, it is wrong. Okay, compound is not a, composition is fixed. Okay, this is a known as a compound. अगर composition variable हुआ तो नहीं, आपका कंपाउंड नहीं होगा. ऑल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर ओनली वन टाइप. ओके, ये सही बात है. ऑल पार्टिकल कंपाउंड आर ओनली वन टाइप. ऑल पार्टिकल कंपाउंड आर ओनली वन टाइप्स. इट इज ए राइट. Second, particles of the compound have 2 or more element. Particles compound have the 2 or more element. सही बात है. एक या एक से अधिक होगा, 2 या 2 से अधिक होगा. एक नहीं, 2 या 2 से अधिक होगा. कंपाउंड में एक होगा तो एलिमेंट हो जाएगा. ओके, द particles of the compound have 2 and more element. It is a constitution cannot be separate by the separate physical method. ओके, फिजिकल मेथड के द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा. Which of the following is a mixture? Gasoline and liquefied petroleum gas, both are the mixture. Okay, gasoline and liquefied petroleum gas both are the mixture. A mixture of sand and naphthalene can be separated. Separated. A mixture of sand and naphthalene can be separated. Sublimation. Okay, sublimation. Naphthalene, क्लोरीन एंड कपूर और ये सभी क्या है, सब्लिमेशन का उदाहरण है दोस्तों. अमोनियम क्लोराइड. नोन एलिमेंट. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन नोन एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर इज ऑफ metals. Most abundant element is नाइट्रोजन या सिलिकॉन. एलिमेंट है ना, तो नाइट्रोजन होगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस इज करेक्ट बिलो. सो क्रिस्टलाइज सोडियम क्लोराइड, नो मेल्टिंग पॉइंट. सोर्सिंग ऑफ मिल्क, ओनली सोर्सिंग ऑफ मिल्क होगा. सोर्सिंग ऑफ मिल्क. द मास 1 atoms of hydrogen is approximately 1.6 gram into 10⁻24 gram. Mass of the one atom of the hydrogen is approximately 1.6 into 10⁻24. 1.6 into 10⁻24, 1.6 into 10⁻24 gram. 1.6 into 10⁻24 gram. ओके, मास ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन का वजन बोल रहा है. ठीक है, एक एटम का वजन कितना होगा, तो 1.6 into 10⁻24 ग्राम. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 18 ml ऑफ द वाटर और डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो हाउ इज द आंसर इज फाइंड. 6.02 into 10⁻23, 6.02 into 10⁻23, 6.02 into 10⁻23. The total number of electron present in the 18 ml. Total number of electron present in 18 ml water. Density of the water 1 gram per milligram. Bar is a unit of the pressure. Mic is the metals. Okay, mic is the metal widely used in manufacturing of the lighters. Okay,
Light cigarette lighter, mic metal is widely used manufacturing of the which of the following cigarette of lighters. Which one of the following is not a mixture? Air is a mixture, milk is a mixture, cement is a mixture, mercury is not a mixture. Okay. Among the given nutrients, milk is the poor source vitamin C, carbohydrate is proper, protein calcium सब और is the proper, but poor source vitamin C होता है. Oxygen दूध भले. Oxygen and oxygen are allotropes. Oxygen and oxygen are allotropes. Oxygen are allotropes. Which of the following is an element? इनमें से कौन सा following element? Silicon. Which of the following is an element? तो silicon following element is a silicon. Which of the one following mixture is the homogeneous? Is the who is it? Methanol and water is the homogeneous mixture. Methanol and water are homogeneous mixture. Falling substance does not have the melting point. So falling substance does not have which of the one falling substance does not have the melting point, जिसका कोई melting point नहीं होगा. किसका नहीं होगा? ग्लास होगा. Which of the following substance does not have a melting point? ग्लास का melting point नहीं होता है. ओके, लेकिन ब्रोमीन, सोडियम और मरकरी का होगा. How many electrons are there is sodium plus ions? So 10. Which one of the following heaviest? इनमें से कौन सबसे heaviest होगा? अमोनियम क्लोराइड होगा. 1 moles of the ammonium. Sorry दोस्तों, now again the problem creating. So how many electrons are there? Sodium plus ions. So which of the following heaviest? वन देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था सोचते सिस्टम में ना, इसीलिए हो जाता है. सॉरी इसके लिए. ओके, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों. 1 moles of the हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा. 1 among the following heaviest, सबसे heaviest किसका होगा? नाउ अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम. तो 1 moles of the सोडियम होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा. ठीक है, सॉरी 1 moles of the सोडियम होगा. 1 of the following heaviest, सबसे heaviest किसका होगा? 1 moles of the सोडियम. हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम. ये मैथ है दोस्तों. कितना होगा 140 ग्राम में? सिलिकॉन है, यानी एटॉमिक मास सिलिकॉन का कितना होता है? 28 होता है. ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स आप 140 क्लास में सिलिकॉन का होगा, कितना मोल्स होगा? तो 5 होगा. कितना होगा? 5 होगा. हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन द 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 28 होता है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट? पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट किसका होगा? लीड का होगा. ठीक है, शीशा का सबसे कम होगा. सबसे पुअर कम लीड का होगा. स्टील का पीवी का सबसे कम पुअर कंडक्टर किसका होगा? सबसे कम लीड का. व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूरिया इज द फार्मूला ऑफ NH2CO मीन्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, 4th एलिमेंट X इज द फॉर्म ऑक्साइड XO3. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X? 6. XO3 का मीन्स X के स्थान पर वैलेंसी कितना होगा? 6 होगा. कौन वाला एलिमेंट 6 वैलेंसी वाला होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फास्फोरस आइटम इज 1 moles of the P4. 1 moles of the P4 2.409 into 10 to the power 24. 2.409 into 10 to the power minus 24. 2.490 into 10 to the power minus 24 होगा. व्हाट इज द नंबर ऑफ फास्फोरस आइटम? 1 moles of the P4 2.49 into 10 minus 24. ओके, 1 part of the weight of the hydrogen. सही बात है, 1.00 part of the weight of the hydrogen. Equivalent weight of the compound is the weight of it that combined with the displacement directly.
and 35 part of the weight of the chlorine and HCl. So 1 and 3 is the right. Consider the following element are exit free in nature. The golden and platinum are the exit free in nature 2 and 3. Which of the following laws explain the formation of the carbon monoxide and carbon dioxide from the carbon and oxygen? So what is it called? The law of the explain the information carbon monoxide and carbon dioxide from the law of the conservation of the multiple proportion, law of the multiple proportion. Okay, carbon dioxide into carbon monoxide into carbon dioxide and from carbon and oxygen is the law of the multiple proportion, law of the multiple proportion, law of the multiple proportion. Who among the following proposes that atoms is individual? Who among the process that atom is क्या है, इंडिविजुअल है? रदरफोर्ड ने नहीं बल्कि डाल्टन ने कहा था. ओके, फॉलिंग प्रॉपर द एटम रिमेन्स द इंडिविजुअल, डाल्टन ने कहा था. फॉलिंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट बी गिव ए सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम नहीं देगा. कौन नहीं देगा? हेक्सेन, हेक्सेन नॉट ए गिव ए द सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम मीन द डार्कनेस लाइट. ओके, सूटी फ्लेम से यानी हेक्सेन ने नॉट ए गिव है सूटी फ्लेम. When a solid is heated, it turns directly. Okay, gas is known as the sublimation. Number of mole 1 to 8 gram of SO2 will be how? This is आंसर you give दोस्तों on the comment box. अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, ठीक है. इफ़ यू लाइक ऑफ द दिस चैनल is to subscribe and next